Sir. Good evening. Sir, happy Republic Day and Basant Panchami to everyone, sir. Yeah. Happy Republic Day and Basant Panchami. Same to you. कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा? Thank you, sir. Yes, sir, it was good. चलो शुरू करें? Yes, sir. कहाँ शुरू करें? Sir, with business standard articles that you have shared. Because Business there are too standard many articles. Business standard articles हमेशा बहुत अच्छे होते हैं ना? हमेशा. Yes, sir. I have always found कि बहुत अच्छे लिखते हैं लोग. There are new ideas also in that. हाँ, yes. इसलिए मैं हर साल अपने इंटरव्यू में यही करता हूँ कि मैं बच्चों को रुकता मत पढ़ो, आप मुझको पढ़ने दो, मैं आपको शेयर करता हूँ. उससे क्या आपका टाइम बच जाता है. Yes, sir. Yeah. चलो. कौन सा पहला? The Supreme Court's supremacy. वो ये आर्टिकल ऐसा है कि आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है. Yes, sir. ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है. चलो बताओ उसमें. Sir, if I can say only the new things, there are two new ideas which the author has given. One is going for exam-based recruitment in judiciary. And the second idea is that having a modified NJAC, where there will be 6 members, of which 2 will be people of eminent personalities. And they would not necessarily come from the government. And 2 people can have veto powers. So in that case, it would enhance the transparency in the judiciary also. And another major aspect is how is that the judges of the courts should in fact go for disclosure of their assets. Okay. And everything should be made transparent, and the appointment procedure, the asset disclosure, and how it is going on in the Supreme Court or in the other judiciary, that should be put on the Supreme Court's website. Okay. Sir, another important part is that he makes a note that the English proficiency of some of the judgments, they itself are incomprehensible. So in order to avoid that, we can have a proper exam-based recruitment system so that these kind of mistakes would not happen in future. So these were the points which were new, sir. I will again say one of the, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि one of the advice given by the Arun Jaitley, how you recruit the judges. अब याद करो मैंने last time भी कहा था, he has given Yes, the 4-5 points. You just note down. पहला क्या बोला था? In place of the examination, he has said something else. The educational background of the person. Second, how many cases he has argued. Third, in those cases, what was the result? Fourth, how many law points he has raised? Fifth, while raising the law point, what was the outcome? Next, whether that outcome has given a new dimensions of the law and was beneficial for the society and development of the law. It is one of the argument he has given how you from you, this is the basic structure. On the basis of this structure, you select the candidates, recommend it, and the panel need to be sent to the government, and government will choose it. Yes, sir. एक अब नई बात क्या जोड़ दी है कि एक बात जोड़ दिया है कि आप एक एग्जाम ले लो. आपने सर it may be thought कि as soon as the person is appointed as an advocate or he is eligible after the age or tenure of the service, one exam Supreme Court may conduct to have a basic knowledge of the law, basic drafting skill. That also can be done. Sir, in fact, there was a provision for all India judicial services also. ये 1987 चल रहा है, आज तक हुआ नहीं वो. Yes, sir. So we can say that it can also be a remedy. Yes. आपका all India जो services, yes.
जो आर्टिकल 348 है वह बात करता है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से हो, किस भाषा में हो। Yes, sir. अब लैंग्वेज का सवाल बहुत बड़ा है। अगर वो ये सवाल आपसे करें कि डू यू एग्री विद द आर्टिकल 348(1) who is saying that language to be used in Supreme Court and High Court is English only, what do you answer? Because if you see the 348(1) and 348(2), 348(1) is speaking about the language of the Supreme Court should be in English, and 348(2) is saying that the president may authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceeding the High Court having its principal seat in the state. So what's your opinion on this? Whether we should go for the languages other than English or not? Sir, especially when it बोलो। sir, when it comes to the states and the High Court, if we are using the dominant language of the state as a language of the court in High Court, then it will increase the inclusivity and the understanding. Whereas in Supreme Court, we can continue with English because it will be getting cases from all across India. So English as a language of Supreme Court can be continued. But however, it should allow the petitions to be accepted in any other languages, sir. If the Karnataka High Court, Kerala High Court, Allahabad High Court, Telangana High Court start passing the order in the regional languages, then what will happen? Can the order in the other languages may be appreciated in the Supreme Court? Sir, that will indeed become a difficulty, sir. But when we are having the translation, which can be done, so we can go for authentic translation, whereas we can say that whatever is there in the English text, that will be the final answer to it. Because of this language, we should not go for exclusion of the people in the society who don't know English, sir. आकाश, आप बोलो आकाश। Yes, sir. आकाश, आकाश, हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. I am completely agree with Bhavana because it is very difficult for the Supreme Court to entertain every cases or proceeding in regional language. But yes, sir, we can allow petition in regional language with translation, as well as sir, in High Court level, we can explore this option about regional language if it is official language of the particular state. हम कब तक अंग्रेजी को लेकर ढोते रहेंगे, हिंदी क्यों नहीं आ सकती है, बताओ? Yes, I'm raising the argument. Tell me, if board is saying that कि why are so fussy about the English, why not in Hindi? हिंदी आपकी राजभाषा है, कामकाज भाषा, क्यों नहीं हो सकता उसमें? बताओ क्या आर्गुमेंट दोगे? You both are from the non-Hindi speaking belt. बताओ क्या आंसर दोगे? Sir, in that case, we should also accept the other languages, the 22 scheduled languages which are mentioned in the Schedule 8 of the Constitution, sir. Because when we are open to accepting Hindi, then the same respect should be accorded to other languages also. ये भी कह सकते हो कि sir, it is very difficult for the delivery of the justice if you use the several languages, because interpretation of law is a very serious issue. But on the same time, using the language of the person may give the inclusiveness, and it may help better to take justice to the people. और कोई आइडिया बताओ, आकाश? Sir, I think Hindi must be promoted, but sir, in some states there is so many people who cannot understand Hindi, like in northeast states as well as in some southern states. So, sir, it is not much feasible to. But yes, we have to promote, sir, because it is our constitutional mandate of the government to promote Hindi as a prime language of India, sir.
और Sir? कुछ बताओ। Sir, even when the court is using English as its language, the type of English they use is also very complicated. It is even beyond the understanding of an average English speaking person in the country also. So why is this necessity that the court should have this complicated language in, and even the constitution also, sir, the language is very difficult to understand. So can't we go for any simplification in that so that it can reach the common man? Legal language is somehow a different issue. जो legal language है, it is not a normal language. It has some different. You have to use the words legally. Although simplification may be done, it's needed. In the Supreme Court, the judges find pride when they try to write in the flowery language order, very well articulated order. तो थोड़ा उनको अच्छा लगता है, बात ठीक है, लेकिन ये कहने इसको अवॉइड करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। आप बोल दो साहब वो लैंग्वेज आसान लिखे हैं, तो आप एक लैंग्वेज के आसान और सवाल कठिन के जवाब में आप अटक गए, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जिस सवाल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो किसी आदमी बहुत अच्छी अंग्रेजी वहां पे हो, सीधी सिनेरियो, और मान लो शशि थरूर का एक आदमी बैठा हुआ, अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो आपने अननेसेसरी एक आदमी को आपने फेवर से आउट किया। तो जो चीज लगे कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, को अवॉइड करना बेहतर होता है। और कुछ रह गया? नो सर। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। बाकी दूसरा ठीक है कि उन्होंने बोला है कि जो दूसरा वही जो लोग कह रहे हैं कि जो अपना वो है कोलोजियम सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो सभी कह रहे हैं। तो जो ऑथर का कहना है कि विदाउट इनवाइटिंग एनी पर्सन आउटसाइड द कोलेजियम, within the collegium you try to make it more watertight department, जहां पर डिस्क्रिशन कम हो जाए एक आदमी का, more than the 1% judgment एक combined judgment में appear, जहां पर कई लोग एक साथ। क्या what is saying कि collegium need to be extended, यही बोल रहे हैं। If you see in the simple language he is trying to say that collegium need to be extended. This form of the collegium is not doing justice for the selection of the judges. So you extend the collegium. तो सभी कह रहे हैं। Now only the difference between the government side and this article, government is saying that no, you allow someone from outside judiciary to take part. He's not saying that. He's saying no, inside judiciary you try to improve the collegium system. Yes, sir. Next. Sir, and another important aspect, what in fact the author highlights, is that the judiciary is not very holy also. Like even previously, there has been some judgments which have favored the government. And also after retirement, some judges have taken the favors from the government. Like immediately they have been appointed as governors or as heads of committees. So we should have proper checks and balances even on the judiciary to enable a proper functioning of the institutions. So this also is mentioned in addition. इस पे भी 2013 में अरुण जेटली का एक भाषण था लोकसभा में. He has said that the judiciary is obsessed with the post-retirement job. बोला when we are not creating the job, they are creating the job. बोला the judiciary need to become out of the obsession of the post-retirement jobs. और जुडिशरी होली है नहीं होली है, इस पे आप बचने की कोशिश करना. डोंट गो ऑन दीज कंट्रोवर्शियल इश्यूज. यस सर. अगर मान लो सवाल आता है कि जुडिशरी करप्ट है कि नहीं है, बोला सर एवरी इंस्टीट्यूशन नीड इम्प्रूवमेंट, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज सम इश्यूज. बोला सरकार के पक्ष फैसला देती नहीं देती है. बोला पीपल आर एलिजिंग दैट. क्या है, मतलब ये ऐसा सवाल है जो बहुत कंफर्टेबल आंसर देने को नहीं आपकी तरफ ले जाता है. हाँ, नेक्स्ट. 3 points for the budget. हाँ बताओ इसमें. ये भी अच्छा है. Yes sir. पहले 3 पॉइंट हैं क्या? Sir, first is with regard to the growth estimates. Second? Second is with regard with the fiscal consolidation path that the ठीक है. government has to take. Third is the trade tariffs.
and our exports. ब्यूटीफुल। बस यही 3 चीज अगर आपके दिमाग में आ जाए, आप बगैर पढ़े आंसर कर जाओगे। इफ दीज थिंग्स, अगर सवाल आता है कि बजट की प्रायोरिटीज क्या है, आप पास अगर यही 3 चीज दिमाग में आ जाए, growth, fiscal deficit and trade, that's all. You are able to answer in the interview board without reading any article, because these are the things emerging from the common sense. आकाश, पढ़ा था आपने इसको आर्टिकल को बेटा? No, sir. Okay. चलो भावना बोलो। Sir, in this I did not understand one aspect. क्या? Higher nominal GDP and revenue growth both in the current year and in 21-22 provided the opportunity for faster consolidation. As growth slows, fiscal consolidation would also become challenging, which can make the higher debt to GDP ratio sticky. Sir, what does this exactly mean, sir? I did not understand. देखो, जीडीपी और ग्रोथ का एक रेशियो होता है। इवन जो फिस्कल डिफिसिट है, ये भी एडवांटेजेस होता है। ये कहा जाता है कि फिस्कल, जो जिस भी देश का जो फिस्कल डिफिसिट 0 है या कम है, वह ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इनका ये कहना है कि जो हमारा ग्रोथ है उसका जीडीपी से संबंध है और फिस्कल डिफिसिट से भी है। डेट आपको लेना ही लेना है। इसलिए देखिए, अगर आप देखो फिस्कल डिफिसिट का, अगर आप फिस्कल डिफिसिट डिफाइन करो तो सबसे आसान क्या है? फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, and without borrowings you cannot go for the growth. For the growth, borrowing is required. तो Sir, should I summarize the? Yeah. Summarize. Sir, do I summarize this article, sir? Yeah. Sir, first it says that the growth estimate, according to the advanced estimates that we have got, the first half of the year will see a good growth around 9%, and the second half of it is likely to reduce to 4.5% because of the global recession and the reduction in the coming of slowdown and recession in the world. The second aspect, it talks about the overall fiscal position. Stop. Yes, in sir. the first point, why there is the growth in the first half, not in the second half? Sir, in the first half, it says that because of base effect also and the COVID pandemic. Yes. The growth in the first half is basically the reason that we are seeing the first half because of the weak base, partly, or economic recovery in the first half. There's two things: weak base as well as the economic recovery, which was disrupted by the second wave, जो second wave पे हो गया था. Yeah, come on the next point. Yes. Got it? Yes, sir. ये अच्छा सवाल है ये. Yes, sir. Next off. Sir, second one is with respect to the fiscal consolidation. The government has said that it will stick to the target of 6.4% in the current year. And it is also aiming to reduce it by 4.5% of the GDP by 25-26. Okay. So this is a gradual reduction in fiscal consolidation, sir. Yes. ठीक है. Akash. Yes, sir. Yes, sir. What do you understood by this? Yes, sir. The article talks about growth estimates, fiscal consolidation, and trade tariff and export. And Okay. sir, it talks about, yes, sir. In first half, the growth rate was high because of the low or weak base effect and the economic recovery in the first half. And sir, and for the
growth, we require borrowing, right? But we have to also ensure that borrowing should be spent in capital expenditure. That's why we can create. Okay. Yes, sir. अच्छा, ये अपना fiscal deficit है भावना. Yes, sir. What are the challenges for the fiscal deficit? Why we are not able to control it? Sir, the major is the COVID pandemic that we have recently faced. And because of that, the fiscal consolidation path was a bit deviated. We've also taken a lot of public welfare measures like Atmanirbhar Yojana and even the food security program, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, that has been expanded till December 2023. So, Yes. and apart from this, the push from the government, because to attract the private investment. As of now, we are not getting much private investments also. So without a proper push from the government, the country might again further go into a recession. So these were the reasons for the increased fiscal deficit, sir. Yeah. You can saw that India is working a lot for the welfare schemes and Atmanirbhar Bharat scheme, the National Food Security Scheme. In the time of the COVID, we are having no option but to supply the free food to a large number of population. These are the reasons that despite our best effort, we are not able to have a target which we want to do, but we are committed to do the target of 4.5% of the GDP by 2025-2026. आकाश इसी बोलो आप same चीज आकाश. Yes, sir. Due to sir COVID-19 pandemic. Yes, sir. हाँ, due to बोलो. COVID-19 pandemic, economic activities disrupted, and so to increase consumption and demand, government have to borrow more, and that's why fiscal deficit is higher. And sir, due to the welfare schemes, which is the need of the hour due to the COVID-19 pandemic, government cannot afford to reduce the cost due to the welfare measures. So sir, those two was a prime factor for the higher fiscal deficit. Okay. Come on, the next point, Bhavana. आप आकाश नोट कर रहे हो ना सब, आप नोट कर लो सब, नोट कर रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, come Bhavana on the next. Sir, in this, क्योंकि भावना का दिख जाता है. हाँ, बोलो. हाँ. Yes, sir. बोलो. Sir, in this, the author also mentions that there is much anticipated slowdown, and even because of this, the government should manage and balance its fiscal consolidation along with the capital expenditure. Concern what he raises. The last one is the last would be the trade aspect, sir. Bhavana, one minute. Yes, sir. You should always advocate for the economy's benefit, the capital expenditure by the government. आप लोग तैयार करना गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेशियो क्या है, तो हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में एक्सेप्टेड है कि गवर्नमेंट नीड टू गो फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट नीड टू गो फॉर स्पेंडिंग. द एक्चुअल वर्ड यूज द स्पेंडिंग. If the government go for the spending, then there will be creation of infrastructure, creation of the there's a production and job opportunities. So you try to advocate this aspect when you argue the case of the recovery of economy, of good economy, how budget is going to, how budget will behave, how the government should work his economic activities. You always say government should work for the capital expenditure. About third way. Yes, sir. Sir, third is that recently it has increased the trade tariffs. But however, to increase our exports, we should not be too choosy on the tariffs, and we should accordingly reduce the tariffs and boost the exports so that India will also be a part of the global value chain. And this will in turn help in the economic growth. तो आप कहना क्या चाह रहे हो? You want a correction in the tariff? Yes, sir. A correction in the tariff. We should also attract investments
And now, considering the Chinese population decline, India has got a very positive atmosphere also and a good opportunity to attract the MNCs to come and make in India, and in turn increase our exports also. आप इसमें दो चीज तैयार करो, लिखो इंडिया का Yes, sir. एक्सपोर्ट, इंडिया का वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है? व्हाट इज द एक्सपोर्ट्स रेशियो ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आइटम्स इंडिया एक्सपोर्टिंग? हाउ मच फॉरेन करेंसी इंडिया इज गेटिंग? Why our balance of trade is negative and how it may be improved? What important item India is exporting? On which area India should work more for better export prospects? How India should attract the world as an investment destination? How India should work for have a better opportunity on the trade front? How higher exports would help attain higher sustainable growth? ये सवाल तैयार करें आप लोग. Sir, Yeah. with respect to the last question, how higher exports will lead to higher sustainable growth? बताओ. This can only happen if the exports are being done like inclusive growth. If we promote more of MSME exports, and if we opt for environmental sustainability and those kind of exports. But whereas if we go for exports which are concentrated in very little industries, which will only benefit the major capitalists, then would it actually lead to sustainable growth? आप इसको पहले you understand what is sustainable growth. What is sustainable? आकाश आप बताओ. आकाश, what is sustainable growth? What is sustainable growth? Sir, the growth which satisfied the need of the present generation without undermining the need of the future generation. फिर से बोलो. Again बोलो. फिर से बोलो. Sustainable growth can be yes, sir. Sustainable growth can be defined as a growth which satisfy the need of the present generation without undermining the need of the future generation. भावना आप बताओ. भावना. For me, sustainable growth is the growth which is inclusive, where all the people or the society will have equal give and take in realizing that growth. And second major aspect is that it should not have an adverse impact on the environment. Okay. और सोचो इसको. Think more. आकाश आप भी सोचो. Think more. Once more you think. Sir, sustainable growth is a growth which promote equity, equality of opportunity, and environmental resilience and protection. भावना. Sir, I think sustainable growth is is that kind of growth which is attainable without undermining any of the environment or creating discrimination among the people. और बताओ. सोचो. Sir, in sustainable growth, the benefits of the growth should be shared among the people, among most of the population, sir. जो आकाश ने बोला था, आकाश ने गूगल से बोल दिया निकाल के. आकाश ने जो बोला पूरा गूगल का बोल दिया.
कि जो सस्टेनेबल जो ग्रोथ है ये needs to of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. या इसको आकाश समझाओ तो आप. Sir, it was actually definition of Brundtland Commission. It was the definition of sustainable development given by the Brundtland Commission. तो क्या ग्रोथ में डेवलपमेंट फर्क नहीं है? Sorry, sir. हाँ? आपने Yes, क्या किया? sir. तुरंत आपने गूगल चला दिया. No, sir, but sorry, sir. हाँ? ग्रोथ में डेवलपमेंट कोई फर्क है? तो क्या फर्क है? What is the difference between growth and development? Difference between growth and development. बताओ आकाश. Sir, growth is maybe positive or negative, like it is value neutral. But development is a qualitative dimension which focuses on not just positive growth, but also focuses on equity and sustainability, sir. Where growth can be negative. बताओ. Sir, I feel that growth is a comparison with your previous self, like how much improvement you have done. Whereas development is more so in accordance with regular set parameters, like the parameters of what is a developed society. So that would be development. Whereas growth would be the improvement in your own self. ज्यादा कहते हैं ज्यादा इंटेंस कौन सा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या ओवरऑल चेंज की बात करता है. ओके चलो, जस्ट आई वांट टू यू स्पीक मोर. अब आ जाओ पॉइंट. हम लोग कहाँ थे? व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ? जो सस्टेन, अच्छा इसको हम एकदम इसी को हम चाहते हैं, इसी को सस्टेनेबल ग्रोथ, जो ग्रोथ सस्टेन कर सके. अगर कोई ग्रोथ एनवायरनमेंट से के साथ नहीं जा रहा है तो सस्टेनेबल नहीं है. कोई ग्रोथ जो समाज के सारे तबकों को एक साथ लेके आगे नहीं जा रहा है, वह ग्रोथ नहीं है. तो एक ग्रोथ आपने क्या देखा? विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सेकंड क्या देखा? जो सोसाइटी के सारे पार्ट को साथ. तीसरा ऐसा ग्रोथ जो हर जनरेशन के लिए काम में, आज के लिए भी काम है और कल भी काम है. अगर ऐसा कोई ग्रोथ कर लो जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर दे, तो इट मे बी गुड फॉर टुडे बट फॉर फ्यूचर जनरेशन. यहां फिर आप आओ कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को. वी नीड टू हैव ए कैपेसिटी बिल्डिंग. विदाउट ए कैपेसिटी बिल्डिंग सस्टेनेबल ग्रोथ वी कैन नॉट हैव. नाउ यू सी व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? Sir, we can say that it is the overall development which is needed and which is holistic and comprehensive. Yes. Even at the level of an individual also, or even at the level of institutions also, both ways we need capacity building. Now you try to correlate sustainable growth with higher exports. जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो हायर एक्सपोर्ट से कैसे होगा? मतलब हमारा हायर एक्सपोर्ट कैसे हेल्प करेगा हमको सस्टेनेबल, हायर एक्सपोर्ट कैसे हेल्प करेगा हमको सस्टेनेबल ग्रोथ प्राप्त करने के लिए? बताओ. Sir, we can say promoting exports from medium industries, and also by promoting schemes like one district, one product, wherein that particular niche product can be taken for. So this will ensure that even the lower rung of the people will have their export items from this country.
मिगाल सर ने सारे पॉइंट रेज कर दिए, अब इसको तैयार करना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है नेक्स्ट? Sir, can we say that higher exports can happen only with the easing of regulations and creating more awareness among the people? हायर एक्सपोर्ट्स के लिए आपको सबसे पहला है, यू नीड टू हैव इंडस्ट्री विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। व्हाट इज सेइंग द सेकेंडरी एस्पेक्ट, आपका एक्सपोर्ट रेगुलेशंस नहीं होगा, आप डाइवर्सिफाई करो। आपका जो एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम है। यू हैव टू लुक फॉर द मोर एवेन्यूज, मोर अपॉर्चुनिटीज। वी नीड टू सी द रेगुलेशन मैकेनिज्म। Yes, sir. रेगुलेशन मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको नए क्षेत्र को, तो आप यू हैव टू लुक फॉर द न्यू एरियाज, कि कौन कौन से नए एरियाज हैं, कहां कहां से हम इसको और प्राप्त कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा इसको। Sir, आज तक we कभी can say the PLI. हाँ बोलो। Sir, can we say the PLI scheme? The PLI yes. scheme. वो स्कीम वही है ही है, पीएलआई स्कीम वही है। यूनिकॉर्न कंपनीज, जो हम नए एंटरप्रेन्योर्स को हम तैयार कर रहे हैं, उनको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उसी लिए कर रहे हैं। Sir, the next one is can we, if the topic is done, हाँ बताओ नेक्स्ट। need for a balanced approach, sugarcane sector. यस, अच्छा टॉपिक है ये, बल्कि बड़ा पढ़ा हुआ टॉपिक है ये। हाँ बताओ। Yes, sir. Sir, in this, there is one concern and one benefit. First, focusing on the benefit is that the permission to convert the surplus sugarcane into ethanol and biofuel, that has in fact helped the sugar industry and the cane growers. And because of this, the outstanding return payable to the farmers has become very less. Most of the returns have been paid. But what is the cause of concern is that more of the expansion sugarcane has happened in states like Maharashtra, Karnataka, and Uttar Pradesh, where there is a paucity of water. And sugarcane requires a lot of water, and it in fact needs standing water. So this is having an ill effect on the environment, and it is causing water depletion. So how we should go about it is that it would be wrong to focus on the first generation biofuels like ethanol and other cereal made biofuels, especially for a country like India. What we can do is we can produce biofuel through the second generation using second generation biofuel production technologies, and we can avoid the use of water guzzling crops like sugarcane, wheat, and rice, and the conversion of these into ethanol. So this was the gist of the article, sir. आकाश बताओ। Yes, sir. As this article talks about, there is a rise in production of sugarcane in different area of the country, specifically Uttar Pradesh, Maharashtra, and Karnataka, which is responsible for the good economic conditions to the producer, because it helps it increase income of basically the farmers who crop, like who produce sugarcane. But sir, it negatively hampered the economic environmental dimension as well, because as sugarcane is very water intensive crop, and the area where the major sugarcane is produced is actually water deficit region. So we have to ensure that the food security as well as food security and energy security as well as environment sustainability versus economic sustainability. So author suggests that we as a India, we cannot afford to produce a first generation biofuel, because in this we have to require those crops which are consumed by the people, but we have to explore a different technology like second generation biofuel,
which are not like consumed by the people at large. So that is. Why are you using again and again environment? Water depletion and environment have a certain difference. They have not used the word in environment. They use the water depletion. Got it? Yes, sir. Yes, या sir. देखिए क्या है, 3-4-5 सवाल आप लोग तैयार करिए। एक तो जो एथेनॉल है इस समय पेट्रोल में कितना % मिलाया जाता है? इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से कितनी हमारी फॉरेन करेंसी बच रही है? एंड हाउ यूज ऑफ इथेनॉल इज हेल्पिंग अस टू सेव द फॉरेन करेंसी। वो उन्होंने आज इसमें नहीं लिखा है, ये पहले मैं आर्टिकल पढ़ चुका हूं, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। थर्ड, we should go for the ethanol or not to go for the ethanol. Now come on this article. This article that speaks about the two things which in the last in his last few sentences the Akash has highlighted. There need to be balance between food, water, fuel and water security. Sorry, food and water security, fuel and energy security. And they have tried to conclude that the sugar cane and sugar cane whose derivatives the sugar or ethanol have a limited role to play. So for energy security and water security, so what I'm trying to say that water security is very important, you take care of this, and your energy security is not going a long way by using the ethanol as a material there. This they want to say, if I understood correctly. Second, they said they go for the second generation production. Second generation ethanol production technology. इथेनॉल शुगर के अलावा और जगह से पैदा होता है ना शायद, और कहां से होता है? और इस होता है Sir, biomass can also generate. या biomass yeah. और उन्होंने एक चीज और कही है कि जो शुगर एक्सपोर्ट है वो काफी ऊपर गया है, 11 मिलियन टन गया है। उसका दो रीजन दिया है, एक इंटरनेशनल जो प्राइस से फेवरेबल हुआ है कर्सी ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और लोअर सप्लाईज फ्रॉम द ब्राजील जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है। तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई द शुगर एक्सपोर्ट्स। इस बार के प्रीलिम्स का सवाल हो सकता है ये कि ये शुगर एक्सपोर्ट जो है बहुत ही हाई गया है और एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसके शिपमेंट से, और शुगर केन बेस्ड बायोफ्यूल को ने हेल्प किया है हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को, हेल्थ को इंप्रूव करने में। तो नाउ कम ऑन द कंक्लूडिंग पार्ट। दे आर एडवोकेटिंग कि आप इथेनॉल को इतना इस्तेमाल मत करो, एनर्जी से फायदा नहीं हो रहा है, आप सेकेंड जनरेशन के बायोफ्यूल में जाओ, यही कहना चाह रहे हैं ये। आई थिंक सर और कुछ हमको नहीं समझ, और कुछ इसमें बताओ। भावना एग्जिट कर गई।
भावना, आकाश, ये और कोई आर्टिकल था क्या इसमें कि हो गया इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड का? यही 3 था ना? Yes, sir. Yes, sir. Let her come back. हाँ, क्या भावना? Yeah, come. Structural strength. किसमें Institutions authority. किसमें है ये? एक्सप्रेस हिंदू किसमें है ये? Sir, standard order. क्या नाम? Business क्या नाम है? standard. Sir, टॉपिक का नाम? क्या business नाम टॉपिक का? standard. नाम का टॉपिक का? Sir, structural शेयर क्या है? हाँ, क्या है इसमें? किस पेज था वो? अच्छा, मैंने दिया था। क्या नाम था टॉपिक का? भावना, आप एग्जिट करो, फिर से आप इन करो। Express today. भावना, आप एग्जिट करके फिर से आप ज्वाइन करो। भावना, एग्जिट कर फिर ज्वाइन करो। आवाज आप क्लियर नहीं आ रही है। यू एग्जिट एंड देन अगेन ज्वाइन। हाँ, किसमें है भावना? Sir, it is there in business standard. क्या नाम टॉपिक का है? टॉपिक का नाम क्या है? Structural strength. मैंने दिया था। आज का ही है? Yes, sir. Structural strength. Sir, you had shared it today, sir. And similar article is there in Indian Express also on the same line, same content, everything is same. Structural strength. In Indian Express, it is given as Holy Book North Star. अच्छा, ओके, यस, गॉट इट, यस। हाँ, क्या है फिर बताओ। बताओ, यस, चलो बोलो। Sir, in this, it is in fact the outline of the Chief Justice of India's speech, which was given, that how Yes. the basic structure is hailed as a North Star. ओके, इसमें देखो क्या है, ये जो आर्टिकल है यह दो बात कह रहा है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह सैंक्रोसेंट है, होली बुक है, और जो हमारे चीफ इंडिया बोल रहे हैं कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है यह नॉर्थ स्टार है जो हमको गाइड कर रहा है। अब नाउ ट्राई टू assemble these two words and try to speak to 2-3 minutes. Just try. आकाश तुम ट्राई करो, बोल तुम ट्राई करो। आकाश यू ट्राई। आकाश। Yes, sir. तो आकाश, दो चीज मैं बता रहा हूं। जो अपना ये इशू है
कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो डाइवर्सिटी लाया कंट्री है, जो हमारा सारा सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन है, यह एक होली बुक है। और चीफ जस्टिस बोलते हैं कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इज नॉर्थ स्टार है, जो गाइड करता है हमारी नेसेसिटी को। अब होली बुक और नॉर्थ स्टार जो दो कॉन्सेप्ट दिया है, एक सीजीआई ने दिया है, एक प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, दोनों को कंबाइन करके कुछ सेंसिबल सेंटेंस बनाओ, 2-3, just for the practice to speak extempore. Just try to make it. Sir, as a basic structure is gives our like direction in with regard to like how our institution will work much efficiently and how we can strengthen our democracy, as well as because basic structure is a core which affords the constitutional supremacy, as well as it focuses on rule of law, sovereignty, and protection of fundamental rights, as well as federalism and secularism. And this constitution is a document which aims to make our society much inclusive, much equitable, and sir, it provides equality in terms of opportunity, as well as it tries to ensure different justice like socio-economic and political justice. So sir, in that sense, it is a holy book, and basic structure is guiding this holy book. Bhavana? Sir, I feel that both the executive and the judiciary are on the same page. If the executive is of the view that a constitution is a holy book, it is because the organs will derive their very existence from constitution. And when the Chief Justice of India says that basic structure as the North Star, the basic structure doctrine was in fact evolved to protect the sacrosanct nature of the constitution, or that of the that basic features which the constitutional makers felt were very essential to the functioning of this very democracy itself. So in that case, the constitution is a holy book, but it can be amended provided the basic structure remains sacrosanct. And judiciary will judiciary which is doing the work which is assigned to it by the constitution, it will make sure that the necessary features of the constitution are kept untouched by the executive or by the legislature, sir. When we want to have certain answers in the changing time, and we want to work for the rights of the person who are less privileged, who are in minority, women, then at that time, this basic structure doctrine is guiding us. It's like North Star. Better हुआ? Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक है, इसमें तो कोई बड़ा सवाल था नहीं, तो वो उस पे तो कोई बोलने ज्यादा जरूरत थी नहीं. Yes, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक, we have to abide by the constitution, but sometimes we need the guidance because the constitution is 75-year old. The time has been changed and changing. New aspiration in the society is coming forward. The minority, the weaker section, the women, the children, the handicapped, they need the justice. At that point of time, the basic structure doctrine helps us to safeguard the interest of the people, sovereignty, integrity, cultural identity of the country, and it is a North Star for us at the time we are losing the path somewhere, or we are searching the path for the destination. इसको अब अच्छा करें ना इसको, ठीक है ना? Yes, sir. पूरा आर्टिकल सिर्फ यही था और कुछ नहीं था. अब पूरा पढ़ लो, इसमें और कुछ नहीं था. Yes, sir. Yes. Yeah. इसको मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि मैंने नॉर्थ स्टार एक नया शब्द मुझे मिला, लगा इट्स अ गुड वर्ड टू इंटरप्रेट. Yes, sir. नेक्स्ट बताओ. Give peace a chance. Business standard only, sir.
बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। चलो इसको हम लोग कल कल कर ही चुके हैं, Yes, sir. इसको फिक्स करते हैं। हाँ बताओ। Sir, the main reason why India can take the leadership of the globe at this point of time, that is what has been outlined in this article, sir. ओके First, we can say that India can lead the G20 because it has been very successful in maintaining a delicate balance in its Okay. approach to the Russia-Ukraine war. While Okay. although it can be said that it is in its national interest, however, we can say that we have pushed for a peaceful dialogue and an approach towards peace, wherein we have again reiterated that it's an era of peace and not an era of war. So India is strongly sticking to its fundamentals. And secondly, we can say that it is not an outlier. There are many other countries also which have, in fact, have got a, sir, it is representing many other global global South countries also, like South America to Africa, and they have, in fact, had a kind of discomfort with the position that US and Europe take. So in this case, we can say that India is giving a certain weight to the voice of the global South. And by using its opportunity as a president and a large developing nation, it also has the opportunity to mobilize the countries in the global South to get solutions to this conflict. So it can act as a mediator also, or as an independent, it can initiate the peace process also. So this was the gist of the article, sir. आकाश, आकाश बोलो आप। आकाश Yes, sir. बोलो। Yes, sir. As India is presiding in G20, India is like it can play a crucial role to mediate between Russia and Ukraine to uphold peace and prosperity, as well as sir, as India always uphold the value of non-violence and peace as its cultural ethos. It always like focuses on dialogue and diplomacy and peaceful resolution with respect of international law and with regard to making No, any Akash, like you are not Akash, you are not addressing the main point. yes, sir. First try करो, again try. Yes, sir. Give peace a chance. तो पहली बात तो Yes, आप sir. अपने माइंड को यहाँ पे कंसंट्रेट करो कि हम की कह रहा क्या, इंडिया पीस को एक चांस दे दे। पाकिस्तान ने एक पीस प्रपोजल दिया हुआ है, इंडिया उस पीस को चांस दे Yes, या न दे? yes. बताओ। Sir, yes, sir. As India is always upholding the value of non-violence and always uphold the international law, so definitely we can give chance to resolve any bilateral issues or any other issues with dialogue and diplomacy. As our honorable Prime Minister said that this era is not the era No, of war. it's very traditional answer. मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। या वही चीज को क्या ना कि घोड़ कह रहे हो, कुछ और बोलो ना यार, कुछ और ट्राई करो। भावना, आपका भी थोड़ा और होना चाहिए था। आपने बहुत ही रूटीन सा आंसर दिया है, ट्रेडिशनल, जबकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन रूटीन आंसर। आपने कल वाला आंसर क्यों नहीं यूज किया? Sir, this article was more on G20 presidency and its opportunity to lead, sir. तो ये कहाँ लिखा है? लिमिटेड, आप इसी की बात करो। यू हैव टू एक्सपेंड इट ना भाई। आर्टिकल क्या बोलता है कि इंडिया जो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है वह पीस को प्रमोट करे, तो कह रहा है ना वो, Yes, और कुछ sir. कह नहीं रहा है। तो इस आर्टिकल से बहुत मदद नहीं हो रही है। अब वह पीस को प्रमोट करो, वो तो बहुत साफ बात है। पीस को प्रमोट कैसे किया जाए? तो इंडिया इज द हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20. India has the responsibility to promote peace and to create a dialogue amongst the other party. And it is the India's shoulder to take care of the peace process within the G20, and the news should spread the beyond boundary. Okay,
Up come on the Pakistan, India. बोला कि sir, it is true that India is having the G20 presidency. India is committed to the peace process. Prime Minister itself that it is not the war of it is not the era of the war, it's the era of the peace. Then also, on what ground we should go for the peace? Pakistan has given only a simple statement for the peace. Pakistan is wanting the peace, and we are asking the peace from last so many years, so many decades. So let Pakistan come forward with certain proposals, then we'll work. बोले कि एक proposal क्या चाहते हैं आप? Then you come on. कि Pakistan should stop the जो मैंने कल बोला कि activity start करे, जो हमारे कहते हैं terrorists वहां गए हैं उनको वो हमको hand over करे, cease fire की बात करे, हमारे यहाँ infiltration न करे. हाँ बोलो. Sir, so in short, we can say that India has always asked for peace from Pakistan. Yes, but it's true however, also. Yeah. Yes, sir. However, as long as Pakistan takes some concrete actions from its side to show that it is really interested in having the peace process with India, India should wait and should take a very clear stand with its relations with Pakistan. So in short, we can say this. You can say, okay, sir, it's just a statement from the Pakistan. It is a welcome move by Pakistan, but India wants some more positive, concrete step on what ground, on which basis this peace process need to be initiated. There is certain points on which dialogue can be done. Dialogue cannot be done only on the basis I want peace. Yes, I want peace. Everyone wants peace. But you say I want peace. But factually you are not doing any peaceful activities. आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हो, आपके हमारे यहाँ के जो लोग आतंकवादी उनको आप रखे हो, आप उनको टेरर फंड देते हो, फॉरेन फंड देते हो, आप उसी काम पर you help us ना, you help us to crack the terrorism. India wants to eradicate the terrorist tendencies across the globe. You help us. तो आप नटशल में कह सकते हो कि साहब उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल आवे, इंडिया जरूर रिस्पॉन्ड करे. इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. और शेखर गुप्ता का आर्टिकल है, मैंने पोस्ट कर, मैं अभी फिर पोस्ट कर देता हूं, मैं डिस्कशन किया था उसमें कि शेखर गुप्ता ने बोला था कि पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ दिया जाए. उनका आर्गुमेंट क्या था कि पाकिस्तान बात पीस करता है, करता कुछ नहीं है, उसी को आप रिफाइन करो. हम उस आर्टिकल सबको मिक्स करके बोल रहे हैं जो कंक्लूजन के साथ एकदम पीस ठीक है, but peace need to be on the certain basis, certain conditions, certain commitments, certain cooperation to control the terrorism. ठीक है आकाश? आकाश? हाँ बोलो. Sir, can we also say that Pakistan should stop meddling with the internal affairs of India? Yes. You get 100%. अगला बताओ. एक हो गया ये. Yes, sir. Next. Sir, now you sent that article how GDP forecasts get revised in 3 years, but I have not been able to. हाँ, वो बहुत काम कर रही है, मैंने भेज दिया था, वो आप काम कर रही है वो. Okay. उसको कोई सवाल नहीं मिल रहा है. या मैं देख रहा हूँ क्या किया है उन्होंने. ये बताने की कोशिश की कि जो जीडीपी का फोरकास्ट वो ठीक क्यों नहीं होता है. इसका कोई इंटरव्यू बहुत सीधा ताल्लुकात नहीं है. Yes, sir. Sir, in editorial of Indian Express, there is Delhi's outreach to Cairo on India Egypt. अच्छा आर्टिकल है ये, पढ़ा आपने इसको? Yes, sir. जो सी राजा रमन है ना, सी राजा मोहन, ये हमेशा बहुत अच्छा लिखते हैं. ये इंटरनेशनल मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं ये. इनका देखो ना, राइटर इज सीनियर फेलो एट द एशियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड ए कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द एक्सप्रेस. इनका जितना आर्टिकल आता है सब अच्छा आता है इनका. चलो बताओ. आकाश पढ़ा आपने? आकाश पढ़ा आपने? यस सर. कुछ बोलोगे? Yes, चलो sir. ट्राई करो. ट्राई करो. Yes. Sir, this article basically talks about visit of Egypt's president, Mr. CSE to Delhi, and sir, it also talks about how India is
upgraded its relationship from bilateral ties to strategic tie. And sir, it talks about the importance of Egypt for India, as it is a moderate Sunni state in the Middle East, and sir, which encourages the peaceful talk, as well as it also focuses on how counter violent religious extremism, terrorism. So sir, it talks about this, and sir, also it talks about how it will like help to strengthen India's reach at the Middle East region, and sir, how it will help to like to curb extremist ideology in Middle East, as well as to how we can like encourage our trade and commerce with Middle East and with Egypt. Bhavana? Sir, in fact, this article outlines the geostrategic importance of Egypt to India. Considering the present situation where US has withdrawn from Afghanistan and the issues like war which is going on in Europe, our interests in Africa and Central Asian regions. So Egypt is at a very central geographical location, and having ties with Egypt will certainly help us further our ties with the other regions in Africa, in Central Asia, and in Europe. And secondly, sir, it concentrates on the historical relationship of India and Egypt. If we see that the relation, in fact, it was 75 years of diplomacy between India and Egypt. So it's almost like from our independence, we are maintaining diplomatic relations with Egypt. So we can say that this is the Amrit Kal of India-Egypt relations also. Then, sir, it also says the importance that Egypt would have in our relations with West Asia and the other Sunni states. India also has a large Sunni population. So the religious ties between Egypt and India can also be furthered. Sir, and another... Yes, yeah. Speaker. Sir, it also Yeah. tells us how to balance our relations between how well we are balancing it with Iran, Israel, Egypt, and Saudi Arabia also. So these were the points of focus which were mentioned in this article, sir. Most of the things you have said, and nicely you have articulated this article. I will say today you have the best articulated this article. If I will start, I will say India's presence in the region or India's tie with the Egypt will promote peace and stability in the region. That is first point. Second, it will consolidate India's new coalition with a modern Sunni state in the Middle East, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है. अगर इंडिया और इजिप्ट एक साथ आएंगे, they join hand together, they will limit the role of the West in the region. It is a most important part. This article is saying that by coming together, India and Egypt, they will limit the role of West in the region, and it will promote the forces such as Pan-Asianism, Pan-Arabism, and Third Worldism. ये बड़ा अच्छे उन्होंने इंटरनेशनल वर्ड के इंटरनेशनल के शब्द यूज किए हैं. और जो अगर साथ काम करेंगे, इनका अगर लोग साथ साथ काम करेंगे, आइसोलेट करेंगे इसराइल एंड फाइटिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन के लिबरेशन पे भी ये मदद करेगा. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, यह उस क्षेत्र में एक प्रभावी ढंग से, एक इफेक्टिव रूप से काम करना शुरू करेगी. दूसरा, अब आते हैं इकोनॉमिक इशू पे. जो इंडिया का कॉमर्शियल स्ट्रेंथ है, जो इंडिया का कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, वह भी काफी यहां पे फुलफिल होगा.
और जो इंडिया का इजिप्ट में रीच हो रहा है, आउटरीच हो रहा है, it is a greater balance to India's engagement with the Middle East as a whole. तो इंडिया के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग कोलिशन होगा मॉडरेट अरब सुन्नी स्टेट के साथ, और वह हेल्प करेगा प्रमोट करने में पीस एंड स्टेबिलिटी इन बोथ मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। तो आप कह सकते हैं जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको नया इम्पेटस मिलेगा। I think after your articulation and after this my has been almost done. Sir? हाँ बोलो। Sir, even Egypt being a moderate Arab Sunni state, and even Pakistan also having considerable significance of Sunni Muslim population, and so with India also, can we say that our relations with Egypt will help us reduce the radicalization of youth, of Sunni Muslim youth, which is happening in India? So इसको आप एक तरह और कह सकते हो, the presence of Egypt in Asia will control the Pakistani influence in that area. If any issue arises with India and Pakistan, then India has a support of Egypt there. इजिप्ट नहीं है, पूरा एरिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, काफी बड़े एरिया है। तो अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों पे देखें तो then this relationship of India and Egypt will strengthen our power to voice our opinion. अपनी बात को कहने के लिए हमको ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा अक्सर मिलेगा। आपने बात कही कि जो मॉडर्न सुन्नी स्टेट है वहां के लोगों से हमारा जुड़ाव भी होगा, और भारत की जो एक सेकुलर छवि है उसको भी फायदा मिलेगा। इंडिया हैज ए कंप्लीट सेकुलर नोशन इन द वर्ल्ड की कंप्लीट नोशन, कंप्लीट सेकुलर कंट्री है। तो अगर हम इन देशों के साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ट्रेड कॉमर्स करेंगे, कल्चरल टाइज करेंगे, ज्यादा आएंगे जाएंगे, तो हमारी जो एक छवि है, जो हमारा स्वरूप है कि वी आर ए सेकुलर स्टेट, उसको भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट। Sir, a similar article, a voice, not an echo. Sir, in this I read even Pratap Bhanu Mehta's article, Fighting the Dark, but I did not find it that relevant, sir. वॉइसिंग एको कहाँ था? ये प्रताप बाजू में काम कर रही है, मैंने पढ़ा उसको। हाँ, I read it, but तो कुछ काम नहीं इसमें। A voice उनका जो क्या है ना, not, ये कहाँ वॉइस नॉट एको कहाँ पे है ये? हाँ, Sir, ये next. ये भी अब काम कर रही है। Yes, sir. It is नहीं, almost कोई काम similar. कर, हाँ कोई काम नहीं, मैंने पढ़ा, दोनों पढ़ा, कोई काम करेंगे। मतलब इसमें जो कुछ लिखा आप सब जानते हो। यही ब्यूटी है न्यूज पढ़ने की। ब्यूटी क्या है कि आप अगर लगातार पढ़ो तो आपका बहुत फास्ट हो जाता है। अब वो मैक्सिमम जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले कहीं ना कहीं टच किया हुआ है, किसी न किसी रूप में टच किया है। नाउ वी आर इंटरप्रेटिंग मोर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो रही है। अब वॉइस नॉट एको, फाइटिंग डार्क, दोनों के दोनों संविधान से निकल रहे हैं और दोनों के जितने पॉइंट है सब डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट। Sir, then in Hindu, sir, in Hindu, one article is very nice, contesting the hegemony of the dollar. बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, बहुत अच्छा है, इट्स टू गुड। इसमें पढ़ा आपने आकाश? आकाश पढ़ा Yes, बेटा? sir. पढ़ो आप। Yes, पहले sir. आप शुरू करते हैं, पहले आप शुरू करते हैं, थोड़ा आप भी बोलो, थोड़ी देर बोलो बोलो। आर्टिकल क्या कह रहा है? Sir. Yes, sir. It basically talks about देखो, different countries are exploring. एक तो मैं आर्टिकल का आपको बता देता हूँ स्टाइल क्या होती है। जो आर्टिकल का पहला पैरा होता है जनरली किसी ज्यादा काम का नहीं होता है। आप जिस लेवल पे आप लोग आ गए हो, इस लेवल के एस्पायरेंट के लिए वो काम करने होता है। क्या है वो? इंट्रोडक्शन करता है। जो आर्टिकल का दूसरा तीसरा पैरा है वहां से काम शुरू होता है।
तो आप जब पढ़ना शुरू करो पहले पैरे को फास्ट पढ़ो, उसे टाइम बचता है। यस आकाश, चलो। Yes. Hmm. Sir, this article talks about how different emerging economies are exploring using their regional currency for the trade. Like how Okay. India is using his with like escrow account with Russia and with other countries like UAE and all. And so also China also exploring that how renminbi, it's a local currency, can be used for the trade for import and export. And sir, but sir, still this article talks that there is a 60% of the global trade is done from the dollar itself, and 20% from the euro. So still there is a hegemony of dollar in with regard to the international trade. But sir, the diversification of national currency in trade is increasing. It's also one sign, but we have to like, and yes sir, it's also talks about when we use our local currency, it reduce the current account deficit. Like as RBI governor, former RBI governor D Subbarao said that India can save up to 4 billion a month in forex outgo if it use its uh, Indian rupee currency. So sir, Very nice. Yes, Bhavana. बताओ. Sir, in this article, the author tries to say that there has been increasing trade among the Asian countries. And these Asian countries have resorted to trading in their own currency. Thereby, it is bypassing the dollar. So with this, it has given a chance for internationalization of the local currencies. And also the same way we are going for internationalization of rupee, where the RBI has opened a Vostro account, and we are trading with Iran, we are trading with Russia, and we are trading with other Asian neighbors in rupee only. And secondly, sir, it tells us how we can make use of organization like BRICS and RCEP, or the trade agreements, to further the transaction in rupee. How this will help us is, this will help us to save our forex. And secondly, sir, it would also help us in avoiding the high currency exchange fluctuations that would occur when we are using a dollar as a currency to have our trade. Sir, other than this, lastly, they say that when we are choosing our own trade partners, then in that case, we can be more open to trading with our own currency. So this is what the article says, sir. Write down 3-4 points. Point number 1. West has the tradition. West was having the monopoly over the currency. Now, the countries outside the West are trying for alternate currency exchanges to reduce risk and dependence on the dollar. So you can say in the one line, they are trying to get away from the dependence of the dollar. Point number 1. 2. This has been started when there was trade war with the China and the US. And the China has started this path. And the Russia-Ukraine war has hastened this development. So there's two important things. One, China and US trade war, and second, the Ukraine-Russia war. Because the Russia trades oil and commodities in ruble and national currencies. Next point. If we see the economic scenario, economic diversification, combined GDP of China, India, Russia, South Africa, Indonesia, Brazil, Iran, Turkey exceeds the G7. तो G7 जो सबसे पावरफुल ब्लॉक है वेस्ट का, जो कंबाइंड जीडीपी है, जो न्यू इमर्जिंग जो नेशंस हैं, अगर उसमें हम चाइना और रशिया को जोड़ दें, वो उससे ज्यादा हो रहा है. तो यू कैन से जो इकोनॉमिक पावर है इनकी बहुत स्ट्रांग हो रही है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन यू कैन से कि दे कैन थिंक बियॉन्ड दैट. दूसरा जो इंटर एशियन कंजम्पशन है,
जिसमें एशियन कंट्री के इनसाइड हाई ट्रेड हो रहा है, और इंडिया का जो एशियन कंट्री से ट्रेड है वो वेस्ट से ज्यादा है, और सेम जो चाइना का ट्रेड है एशियन कंट्री से, वह वेस्ट से बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं एशियन कंट्री के साथ जो इंडिया का और चाइना का ट्रेड है वो इतना ज्यादा है कि वी कैन थिंक बियॉन्ड डॉलर, कि अब डॉलर क्या जरूरत है, हम लोग खुद ही अपना अपना ट्रेड करते हैं। अब जो हाई एक्सचेंज रेट है डॉलर का, वह बहुत सूट नहीं कर रहा है। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, जो मतलब जो डॉलर का हायर एक्सचेंज रेट है, उसको देखते हुए इमर्जिंग जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने इनिशिएट किया ट्रेड को नेशनल करेंसीज में। और जो एशियन सेंट्रल बैंक है उसके पास 400 बिलियन से ज्यादा के ऊपर करेंसी है, और 2019 से इंडिया रशिया के साथ फ्यूल ऑयल मिलर का ट्रेड कर रहा है इन रूपी ऑन एन इनफॉर्मल टर्म्स। अब यह तो हमने अब समझ, अभी इससे जो हमने डॉलर की हेजरमी तोड़ रहे हैं उसका मतलब फायदा क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? हम डॉलर को इसलिए नहीं अटैक कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो नेशनल करेंसी है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पाएंगे आई विल टीच यू व्हाट इज फुल्ली कन्वर्टेबल। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर की हेजेमनी क्यों बनी हुई है डिस्पाइट ऑल व्हाट वी टॉक राइट नाउ, कि हमारी जो करेंसी है, नेशनल करेंसीज हैं, वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। इसलिए हम लोग अल्टरनेट सिस्टम लाने के बाद भी जो हमारा राइस जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ ट्रेड हुआ है, और जो हमारी मल्टीपल करेंसीज का जो मामला है, डॉलर इज स्टिल डोमिनेट। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब तक नेशनल करेंसीज अपनी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होंगी, हम डॉलर के डोमिनेशन को नहीं रोक पाएंगे। तो एक एक बड़ा अच्छा सवाल तैयार हो रहा है कि ठीक है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, डॉलर क्यों डोमिनेट कर रहा है? तो क्या होगा, हमारी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अगला सवाल आएगा क्यों नहीं है, उसको तैयार करिए आप लोग। दूसरा, Just अगर because हम, हाँ, the capital account is not convertible, यस whereas the यस current यस account. यस यस, इसको ठीक तैयार कर लेना। इस क्या ही लंबा डिस्कशन हम लोग आग करेंगे तो और नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग अलग से कर लेंगे, कभी नोट करो, कभी हम लोग कर लेंगे। दूसरा क्या है, जो डॉलर है वह 60% ग्लोबल करेंसी का पार्ट है, यूरो 20% है, येन 5.8 और युआन 3% है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी ट्रेड का बड़ा पार्ट जो है डॉलर और यूरो ही है। लेकिन क्या है, जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है नेशनल करेंसी का, ट्रेड में बढ़ रहा है, हमारे एक्सचेंज बढ़ रहे हैं, जो न्यू सप्लाई चेन है वो अल्टरनेटिव करेंसी चेन पे काम कर रही है, और एक मल्टीपोलर सिस्टम वर्ल्ड का बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट करेंसी। मेरे ख्याल से हो गया। आकाश, कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. बोलो। Sir, exactly how this if we use our local currency for the trade, and exactly how it will benefit us, like as a RBI governor said that it will help like $4 billion to like देखो, encourage एक तो क्या है, outgo, but exactly एक तो हाँ, जो आप डॉलर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी ही अर्न करनी पड़ेगी। अगर रूपी को डॉलर में आप कन्वर्ट करते हो तो एक्सचेंज रेट अच्छा खासा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप रूपी में करते हो तो आपके पास पैसा है ही है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जैसे इंडिया परचेज कर रहा है पेट्रोल रूस से,
इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, क्योंकि वहां से पैसे नहीं निकाल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। अगर यही आप पेट्रोल रूस से आप कर दो डॉलर पे, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज कम होने लग जाएगा। आपके पास रुपए की कमी नहीं, आप रुपया तो आपका सही है ना पास। गॉट इट Yes, sir. आकाश? Yes, गॉट sir. इट? Yes, sir. हमने उस दिन Yes. आउटलाइन किया था। दिक्कत क्या है कि जब आपने रूस को रुपया दे दिया, तो रूस उसका क्या करेगा? नहीं, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि रूस उस रुपए का क्या करेगा। तो ऐसा सामान आपके पास हो कि रूस आपसे परचेज कर सके, नहीं तो रूस क्या करेगा उस रुपए का? द मनी विच यू हैव गिवन टू रशिया हैज टू रिटर्न यू बैक। फॉर दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट द आइटम टू द रशिया। इफ यू हैव नो कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट, तो बेकार हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो, आपकी अल्टरनेटिव करेंसी तभी चल पाएगी जब आप जिस देश के साथ आप ट्रांजिट कर रहे हो, वहां आप अपना आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए सरकार बोल रही है कि वह इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देगी। आप रूपी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सको, आप इंडिया में रूपी में गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा सको। इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है रूस को देने की बात चल रही है। तो रूस क्या करेगा? उसको मतलब बेचते हैं और बेचेंगे, तो वो वापस आएगा। तो रूस को भी रूस को सामान खरीदना है तो आपसे खरीद लेगा। इससे आपका ट्रेड भी विकसित होगा। नाउ टू अप्लाई माइंड मोर एंड मोर कि बाय दिस प्रोसेस यू ट्राई टू इंक्रीज योर ट्रेड ऑल्सो। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? हाँ Sir, along with this, can we add another benefit? बोलो। That RBI has to currently go for managed float. Whereas if we are advancing the use of our own currency, then the interference of RBI in forex reserve also will be reduced. Yes, Thereby, yes. RBI can formulate its own interest rates like repo Yes. rate. It Yes, need not depend upon the rate of the federal bank, and we need Yes. not align our rates according to their rates. Yes, So yes. in long run, this will be the benefit. Yes, yes, yes. You can add it. क्लियर हुआ आकाश? चलो व्हाट्स नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. विकास, हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Sir, other than this, artificial intelligence is good, sir. हाँ उसको कुछ डिस्कस करने को तो है नहीं, पढ़ देना उसको। मैंने नहीं, sir, देखा there is हाँ, nothing. सिर्फ इनफॉर्म पढ़ देना उसको, मैंने उसको लिख दिया था। Yes, sir. ऑन द मैट में भी कुछ नहीं है। नहीं, sir. कुछ है कुछ नहीं No, इसमें। sir. मैं पढ़ा देखा तो और गाड़ तो है नहीं है, हो गया। Sir, वो है other than that, I read the other two articles also. Torpedoing a कुछ submarine rumor. Even that is not very relevant. कुछ नहीं इसमें, मैं पढ़ा उसको, कुछ नहीं इसमें। And even censorship also, sir. नहीं वही काम का नहीं है, वही काम That का is, नहीं है। other than that, there is nothing else, sir. चलो आज बहुत अच्छा रहा। देखो एवरीडे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, एवरीडे हर दिन लेवल बढ़ रहा है और आप लोगों के एनालिसिस बहुत इंप्रूव कर रही है। समटाइम्स आई फाइंड कि अब आप लोग ऐसा भी पॉइंट निकालते हो जो मेरे दिमाग में नहीं आता था, पहले ऐसा नहीं होता था। राइट नाउ योर लेवल इज कमिंग क्लोज टू अस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और पक्का सिलेक्शन होगा, डोंट वरी, 100% होगा, 100% होगा। चलो ओके, टेक केयर, तो सी यू टुमारो। बाय Good night, sir. बाय।